All right, Bismita, we are rolling. So हाँ, today we तो are भाई just going to सबा talk about the dangers of perfect picture, right? हाँ, And my perfect stand is picture. that, yeah, my stand is that perfect pictures can kill. हाँ, they definitely do a lot of damage. धीरे धीरे स्लो डेथ होती है क्योंकि आपको बचपन से आप हर चीज के बारे में परफेक्ट पिक्चर आपको दी जाती है, राइट? रिलेशनशिप्स के बारे में, दुनिया कैसी है उसके बारे में। और तुम और मैं करीब पता नहीं 18-19 साल के थे तब से एक दूसरे को जानते हैं और बातें करते हैं, तो अपनी अपनी परफेक्ट पिक्चर को अनरावल करते हैं कि इतनी परफेक्ट नहीं है, इसमें थोड़ा सा ये वाला रंग भी है और वो वाला भी है और वो वाला, और बड़ी बड़ी मेहनत लगती है खुद अपनी पेंटिंग को, अपनी दिमाग की परफेक्ट पिक्चर को अनरावल करने में, नहीं? Yeah. And yeah, so I think when we met in college and we were 18 and 19, and we both came with a lot of baggage of our own perfect pictures of our families. You would talk about your perfect brother. I would talk about my perfect father and my upbringing, which I believed was the most amazing upbringing ever, right? And then we have actually gone through so many things which have punctured holes in those stories that we were told we should be telling ourselves. Someone told us that we should be telling those stories to ourselves. And they were so ingrained in our image that taking those stories out was almost like dismantling our own personalities in some ways, you know. And और ये तब हो रहा था, सॉरी टू जंप इन, ये तब हो रहा था जब तुम और मैं वैसे ही बहुत सारे फील्ड्स में रिबेल कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत कोशिश कर रहे थे किसी एक पिक्चर पे फिट होने की, लेकिन फिर भी एक परफेक्ट पिक्चर थी पीछे, जिसको एड्रेस करने में तकलीफ होती थी, राइट? सो कंटिन्यू। करेक्ट, हाँ, वो रिबेल भी एक परफेक्ट पिक्चर थी, है ना? Because very recently, I made the discovery. Actually, I was able to articulate it. The discovery had been happening for a long time. I was able to articulate that all my life, I've had this image of a rebel. I have taken the brunt of being a rebel, but I am actually inside a bloody people's pleaser. And I think you would endorse that, right? In every relationship, right? I've always been a people. मतलब हम चूज कर रहे हैं कौन से वाले लोगों को प्लीज करेंगे या चूज नहीं कर रहे, मगर एक पर्टिकुलर किस्म के लोगों को अपनी लाइफ में प्लीज कर रहे हैं ना, चाहे वो अपनी फैमिली हो या जो भी हो। My default mode has been. You're right. I think my default mode was people's pleaser with a icing of rebellion. So what we are going to talk about is how puncturing holes in the perfect picture can actually save lives. How? अच्छा, पहले बताओ कि डैमेज कैसे करती है परफेक्ट पिक्चर? मतलब तुमको और मेरे को तो पता है कि हमारा ये ऑलमोस्ट एक कोड वर्ड है, परफेक्ट पिक्चर, हमें पता है what we are talking about, right? Explain that, paint that picture for me. What is a perfect picture, and then how does it damage? Oh, what is that perfect picture? So the perfect picture is that you have kind, loving parents who have always been devoted to you, who have always been thinking well of you. Your brothers and sisters are all very healthy, successful, heterosexual, upwardly mobile people. Okay. Expectations. Yeah. So we don't talk about financial troubles. So middle class, we don't have financial problems. We are all doing very well. We all have very upwardly mobile siblings who are doing very well. We all have very devoted parents who are doing very well. We also have beautiful children, and we have welcomed motherhood into our life with an open heart and joy. And we have found the perfect love also. You know, the man in our life loves us so much, and he contributes to everything that we do in life. I've had two broken marriages.
I really held the perfect picture both the times. You know. अरे तुमने छोड़ा नहीं अपनी ऑप्टिमिज्म को. मेरी तो सबसे पहले you're right. My first मेरी फैमिली की पहला dismantling of the perfect picture was when my perfect brother, my elder brother, whom I love very much, came out and said I'm gay. You know, तो मेरे इतने पढ़े लिखे evolved पेरेंट्स जो थे और मेरे लिए वो एक किस्म का पॉइंट था जहाँ पूरी फैमिली को समझना था कि ये क्या है, what is this, how do we, what does that mean for the family and more importantly for my brother, right? तो dismantle, I remember that is a big moment जब मेरी फैमिली का perfect picture dismantle हुआ. और लोग कहते हैं कि जब आप की फैमिली में कोई एक सामने आता है और कहता है मैं गे हूँ, तो पूरी फैमिली, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में फ्रेज है कमिंग आउट ऑफ द क्लोजेट, तो द होल फैमिली गोज इनटू द क्लोजेट. क्योंकि अब आपको धीरे धीरे आप कदम निकालते हैं कि अच्छा पहले तो हम समझें उसको, उसकी एक्सेप्टेंस, वो उसका क्या मायने है, और फिर वो हम किसको बताएं, फैमिली में किसी को ना बताएं, या बताएं इसको बताएं उसको ना बताएं. ये डेकेड्स तक चलता रहता है. और ये तब जब ओवर्टली कोई बहुत बड़ा ड्रामा नहीं हुआ. मेरे पेरेंट्स वाकई बहुत इवॉल्व्ड पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्होंने इस रियलिटी से स्ट्रगल नहीं किया कि उनका इकलौता बेटा जो इतना सक्सेसफुल है, इंजीनियर है, अमेरिका में पढ़ रहा है एस्ट्रोफिजिक्स. Just when I had met you, you talk very little about yourself and your intelligence or your accomplishments, but you always talked about how perfect your brother was, you know, and you used to say, well, and he was doing all that, but there was a perfection to it. And one of the criteria of that perfection, I remember, was कि उसको लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है. So लड़कों में that you so you always used to, so every girl felt safe with him. And when I met him, he was such a, like, the first time I met him, he was such a warm person, and I just warmed up to him, and I was so friendly with you. I kind of had a mild crush on him also. And yeah, but also imagine तो अच्छे लड़के तो वही होते हैं ना जिनसे लड़कियां थ्रेटन नहीं होती, जिनसे अच्छे से बात करती हैं. दैट इज अ परफेक्ट पिक्चर. वो गे था. दैट इज द रियलिटी ऑफ द परफेक्ट पिक्चर. कि अगर आप किसी लड़के से, जब आप 16-17 साल की होती हैं, उनसे बात करने में झिझक रही है, या कोई एक अंडरलाइंग सेक्सुअल टेंशन है ना, तभी तो झिझक हो रही है, समझ नहीं आ रहा, ऑकवर्डनेस है, वो नहीं थी उसके साथ क्योंकि वो गे था. और लड़कियां शर्माती थी, वो दूसरी बात है. Tell me, how was it breaking that perfect picture? Because another incident that I remember is that you and I were very close, but I got to know about your brother through a third friend. She told me that Vismita has told me that her brother is gay. Now this is, we're talking about early 90s, and that was the time when we were all very clearly homophobic people. To a lesser degree or a more degree. हाँ, पता ही नहीं था असल में, इस बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं होती थी. जो कान में बातें आई थी वो बहुत पॉजिटिव नहीं थी इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में. So I am very aware that was a time when I used to actually I couldn't talk about homosexuality without cracking a joke. So I was in that space. But so this friend told me that Vismita has told me about her brother, but she will not tell you because she will take her time to tell you. And I was very hurt. Vismita, तुम्हें लगा कि हाँ, why is she not telling me? क्या मैं सोच, हाँ, कि तुम मजाक तो नहीं उड़ा दोगी. हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि तुम उस वक्त जो थी बहुत पॉपुलर थी मेरी नजर में. अब हमारी क्लास में सब तुम्हें बहुत प्यार करते थे. तुम कोई ऐसे, तुम्हारा ह्यूमर ऐसा था कि बहुत ही कुछ बोल देती थी, लोग हंस देते थे. तो हो सकता है कि ये मेरे दिमाग में हो कि यार मजाक ना उड़ा दे, क्योंकि जब आप खुद ही डील कर रहे हैं ना इस इंफॉर्मेशन से, आप प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं अपने भाई के लिए और ऑल ऑफ दैट, तो आप चुन चुन कर लोगों को बताते हैं ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप इसको प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि उस वक्त कोई आपको या आपके भाई को अटैक करे.
तो हो सकता है कि मजाक भी एक तरह का अटैक ही होता था उस समय, अगर हम ना समझें किसी बात को। ऐसे कई बातें हमने एक दूसरे को कही होंगी मजाक में जो लग जाती है ना, और ना समझ कर, तो हो सकता है, ये हो सकता है। Yeah. So this is one big ticket issue of the perfect picture that that most, not even very traditional but non-traditional families also carry in their heart. Things are opening up and people are more comfortable with their children's sexuality, alternate sexuality and all that. But there is still, I mean, your perfect son, your perfect daughter, and it causes so much trauma to the person who has to hide it for many years before coming out. It causes trauma to the family, which has to come out and speak about it. And and it causes, I mean, it's a matter of shame for me that I wasn't that informed. And if there were more discussions about these things. Even I wasn't informed, so you don't have to feel bad about it. But you're absolutely right कि उस perfect picture का सबसे बड़ा victim तो मेरा भाई था, है ना? क्योंकि अब imagine the pressure, आप इकलौते बेटे हैं, आप इतने achieve कर चुके हैं, आपने स्कूल में आपके academic records unbroken हैं, लोग आपको genuinely प्यार करते हैं, लोग कहते हैं बड़े होकर इसकी तरह बनना, you know, and you're hiding such an important part of your personality. So ये तो बहुत ही you know scary चीज है उस इंसान के लिए, सबसे पहले उसके लिए, हमारे लिए हम तो पेरिफेरल कोलैटरल डैमेज थे उस परफेक्ट पिक्चर के absolutely हमारी तो कोई वो थी नहीं. I mean, it was absolutely perfect judgment on your part to not share it with me. I resented it, but many years later I realized that I wasn't worthy of that information at that point of time, you know. So yeah, we'll stick to this subject only today because we're talking about this perfect picture which is presented in today's time in the world of social media, there where you are constantly bombarded with perfect pictures, right? And your brother's story is a very healthy and happy and successful story, right? Because he was able to cut through that crap of perfect picture. He was able to communicate whatever his trauma before that, you know, and his struggle before that. There must have been quite a struggle for him also. And the family's dynamics and whatever they dealt with and keep dealing with when people talk about it. But he has become, because he came out, because he broke through that perfect picture of एक बेटा एक बेटी, हम दो, हमारे दो की perfect picture थी तुम लोग की. It must have उसमें से बेटी तो पहले ही बहुत सारे ऐसे काम कर रही थी जो बेटियों को नहीं करने चाहिए, right? I wasn't really the usual, I wasn't doing that, है ना, कि कॉलेज जाओ सर झुका के वापस आ जाओ, इस तरह के तो हम लोग थे नहीं. वैसे ही हम लोग थोड़े डिविएंट किस्म के थे. बेटा ही परफेक्ट था उसमें, जितने हम डिविएंट थे वो बेटे को ज्यादा परफेक्ट बना देता था. तो प्रेशर बहुत था. He was the Ross of the family, so you were the Monica. Yeah, but imagine if everyone chose to keep that perfect picture. Your brother has ended up inspiring so many people. He has become, his coming out has helped so many others to deal with their own situation and not feel guilty and find courage to. And you made that film as the sister of a brother who had come out. And that you were telling me that a lot of people, it helped a lot of people. It did actually. When I made that film 20 साल पहले अटलांटा में मैं थी, तब मुझे दूर दूर से ईमेल्स वगैरह आते थे. उस समय सोशल मीडिया तो नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था. तो मनीला में एक अंडरग्राउंड लेस्बियन सपोर्ट ग्रुप है जो लिख रहे हैं कि आपकी फिल्म को हम एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं अपनी फैमिलीज के को समझाने के लिए, बिकॉज इट्स टोल्ड फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्ट्रेट सिस्टर जो देख रही है इस सिचुएशन को, राइट? तो it's true that but it was still a long journey of us, but him and all of us coming out together as a family openly. उस पिक्चर को बहुत recently 20 साल के बाद मैंने YouTube में डाला. मैं सोचती हूँ इतना वक्त क्यों लग गया, क्योंकि लोग बार बार पूछते थे क्यों नहीं डालती हो. बहुत सारे कारण थे, शायद उसमें एक ही कारण भी था कि ये जो perfect picture है इसको finally तोड़ना आसान नहीं है.
है ना? Also, I remember. No, let's stay with one subject. We are, as we go along and record more things, we are going to talk about how we talk about relationships, how we talk about motherhood. Actually, you're always told that motherhood is so beautiful, but भाई motherhood का तो बहुत perfect picture, बहुत damaging है. Yeah. ये मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ. Just sorry, I know you want to stick to that story, but I just एक ख्याल मुझे आ रहा था. ये एक बहुत बड़ी कंपनी, इनफैक्ट मैं नाम नहीं लेती कंपनी का, उसकी COO आई थी हमारे दफ्तर में और बात कर रही थी, और वो अपने साथ अपने बच्चों को लाई थी विदेश से. वो काम पर आई थी, बच्चे साथ में थे उनके. तो वो जो उनसे बातचीत हो रही थी उस वक्त, मेरा सवाल उनसे ये था कि आप जो इतनी बिजी रहती हैं, और तो ये मदरहुड का गिल्ट से आप कैसे डील करती हैं कि आप मदर्स के अपने बच्चों के लिए जब नहीं होती हैं. तो उनका जो भी जवाब था, अब मैं सोचती हूँ कि that was the foremost thing on my mind. मैं अपने काम पर भी रहती थी, तो बिकॉज आप हमेशा किसी परफेक्ट पिक्चर से लड़ रहे होते हैं. मदरहुड तो बहुत ही गिल्ट रिडन टेरिटरी है. It's a very vast topic, Vismita, and we all have belong to a generation where we took very uninformed decisions about entering parenthood, because there wasn't anyone telling us that there are two ways of thinking about it. आप शादी करेंगे, उसके बाद आपके बच्चा होगा, how beautiful. I've seen so many women who have lost their mind, not knowing what it means to their career, to their personalities, to their dreams and all that. So we'll keep it for a different time. That's a subject we'll talk about in detail. That how motherhood is not all as glorious as people keep talking about, and motherhood is not for everyone. I really want to go out on a limb and talk about how motherhood is not for everyone. It's true. Jab tak I didn't want to be a mother, which was quite late in my life. I was. So, let me come back to save that for the next topic. But let me just come back to this. So, when your brother got married to his partner, and when he was putting a lot of pictures out there on Facebook. So for a lot of us, looking at those beautiful pictures, for me, I was going through a very bad time romantically at that point of time. And that his romance actually brought my faith back in romance, right? But I know that there were some problems. Cute, they are cute, newly married, silly newlyweds, but तुम बड़ी inspired हो जाती थी उनकी फोटो से. तो हमारी फैमिली में तब तक तो बहुत सारी हमारी जर्नी आगे बढ़ चुकी थी, बहुत लेवल्स पे एक्सेप्टेंस थी. तो माँ कहती थी कि भाई देखो ये because Dada was in a serious relationship उससे पहले, उसके बाद he found the love of his life and got married legally, तब recently अब allowed है अमेरिका में, और बड़ी सी पार्टी की और all that. तो माँ कहती थी कि ये देखो नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ भी जब दूसरी शादी होती है ना, तो उसको तो थोड़ा सा कम सेलिब्रेट किया जाता. तो इतना हंगामा करने की क्या जरूरत. तो मैं यही सोच रही थी कि एक तो हेट्रोसेक्सुअल शादी के बारे में ये अजीब सी उसके ऊपर ये बंदिश है कि तुम्हारी दूसरी है या तीसरी है या चौथी है तो तुम ज्यादा सेलिब्रेट ना करो, और उसको तो my belief is every time you fall in love, celebrate it. You should celebrate it, right? तो I know, but मुझे समझ में आता था माँ कहाँ किस उससे बोल रही है. पहले तो हम लोग किसी भी चीज को साझा, परफेक्ट पिक्चर को एस्टैब्लिश करने की एक लैंग्वेज थी. माँ बाबा के टाइम एक अलग लैंग्वेज थी. आप शादी में सब रिश्तेदारों को बुलाते थे, शादी इस तरह से होती थी, उसमें मामा चाचा ताया फूफा सबका रोल होता था, सबको पता होता था, वो परफेक्टली प्ले आउट होता था. लड़ाई झगड़े के साथ वो शादी जो थी वो दैट वाज द परफेक्ट पिक्चर, राइट? अब हमारे आज की दुनिया में परफेक्ट पिक्चर क्या है? सोशल मीडिया. परफेक्ट फोटोज न्यूलीवेड्स पोस्ट करते हैं, राइट? अब उसमें दादा इज सेलिब्रेटिंग हिज लव फॉर हिज गे पार्टनर. तो ये तो वैसे ही माँ के लिए थोड़ा अजीब है, क्योंकि ये उनकी जनरेशन की चीज नहीं है. और हम लोगों के लिए भी अजीब क्या है?
हम लोगों के लिए सोचने की बात ये है कि अब परफेक्ट पिक्चर वो से चाचा ताया आके नहीं बनाते हैं, वो परफेक्ट पिक्चर अब फेसबुक पर बनती है या इंस्टाग्राम पे बनती है, राइट? उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, राइट? तो लेट्स टॉक अबाउट दैट, जो तुम देखती हो और उसके बाद जो we're coming रियलिटी to होती almost 20 minutes. So let's just sum है. it up that the perfect picture is basically a tool of conformist behavior, right? It puts you in a slot. It tells a woman to behave like a woman. It tells a mother to behave like a mother. It tells a daughter to behave like a daughter. It is, and it is mostly defined by class, heterosexuality, right? And an idealized version of what life should be. And it would be fine if it was not for people who start imposing that picture on you. The flip side of that is that it actually it isolates those who don't relate to that picture. Someone who more or less relates to your perfect picture is fine, but it actually isolates those who are not close to that perfect picture. Also, the actually, pressure. I would argue, Saba, कि it isolates everybody. क्योंकि अगर आप जो पिक्चर डालते हैं फेसबुक पर या इंस्टाग्राम में या ट्विटर पर, वो आपकी बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे दिखाता है, उससे आगे पीछे क्या हो रहा है वो तो नहीं दिखाता है. और एक के बाद एक वो सीरीज मेरे दिमाग में चलती जाती है कि यार सबा की जिंदगी क्या मजेदार है, क्योंकि देखो उसकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है. उसकी लाइफ में वो एडवेंचर कर रही है, पेड़ पे चढ़ रही है, बिल्लियों के साथ खेल रही है, कुछ कहीं पे उसके काम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है. वो कांस्टेंट. और तुम एक ही हो, एक ही नहीं हो. मेरे फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं जो उस अलग अलग की तरह की पिक्चर्स को दिखा रहे हैं. तो इट एट ऑल टाइम्स इट आइसोलेट्स यू, इट पुट्स प्रेशर ऑफ द परफेक्ट पिक्चर ऑल द टाइम ऑन एवरीबॉडी. अलग अलग ढंग से अलग अलग लोगों की स्टोरीज दूसरे लोगों को ट्रिगर करती है. जिसको लग रहा है कि मैं अभी करियर में इतना नहीं कर पा रहा हूँ, उसको करियर वाली चीजें ट्रिगर कर रही हैं परफेक्ट पिक्चर में. जिसकी पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है, उसको लग रहा है यार उसकी शादी कितनी बढ़िया चल रही है, लेकिन उस फोटो में जरूरी नहीं कि उसकी शादी. I know people who have marriages which are barely on paper. Okay, I know people who have such shattered marriages that it's amazing that they managed to live under the same roof, and still there is this perfect thing where people want to people say, oh, we wish we have a relationship like yours, and I'm like, no, you don't. And but the problem is कि फेसबुक पर क्या हो रहा है बताओ. अगर शादी तुमको पता है कि ठीक नहीं चल रही है, तो फेसबुक पर कैसी दिख रही है वो शादी? वो एनिवर्सरीज विश की जा रही हैं, एक दूसरे की कि तुम मेरी जिंदगी के, हाँ तुम, आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू इन माय लाइफ. और एक दूसरे को पुचियां दी जा रही हैं, एक दूसरे की बर्थडे पे हग करके मुचुक 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 हो रहा है, जो कि बेडरूम में नहीं हो रहा है. ओके, बिल्कुल नहीं हो रहा है. But and then someone, one second, let me just complete. What happens is that someone who has a realistic relationship, which is full of fights and angers and love and care and everything, is feeling very intimidated कि यार उनको उतना प्यार करते हैं एक दूसरे को, तुम मुझे क्यों नहीं उतना प्यार करते. जबकि what you don't realize is that you probably have a healthier relationship than that one, right? But I'll just conclude it here, and then we can take up the topic of aging. How we talk about aging, we can take up the topic of menopause. We are constantly as women told, oh, the freedom of menopause. Okay, you disappeared. Sorry, you don't want to talk about menopause? My phone is running out of charge. It just disappeared. No. Literally and metaphorically, phone is running out of charge, out of juice. Basically, the fact that you're told that, oh, the glory of menopause. रुक जाओ, पहले बात तो कर लो what you have to dealt with, उसके बाद glory की भी बात कर लेंगे. But let's have glory of menopause. तो भैया जो बोलेगा थप्पड़ लगाऊंगी मैं. ये बिल्कुल बकवास है. Who's saying? So glory of menopause, glory of motherhood, relationships. And because I feel, and why I think it is very, very important to talk about it, is because when the gap between the perfect picture and the reality, when it widens, it's very big.
it can actually sometimes engulf an entire person. Okay, it can become a cause for depression, it can become a cause for anxiety, it can become a cause for affairs, and quitting your job and traveling like crazy and then coming back to the reality ki bhaiya middle class hu main paisa chahiye. And it can actually even lead to suicides, because this gap, I mean, you see a lot of suicides that you might hear about. You will see the perfect picture on their social media profile. And I'm not just talking about celebrities. I'm talking about, I recently lost a friend. She was forever traveling, foreign travel, Indian travel, part of every group. Perfect life. Foodies, a perfect life. And she, just about a week back, she killed herself. So that is how important it is to talk about puncturing the perfect picture and to create the realistic nitty-gritty of dealing with life and its issues. Which doesn't mean that we only talk about dark things. It just means that we talk about beauty in a very realistic form rather than this manicured social media projected form, which has. अच्छा, मैं इस एपिसोड को खत्म करने से पहले अपना रोना रो लेती हूँ क्योंकि तुमने क्या कि शादियों को कितने परफेक्टली रिप्रेजेंट करते। मेरी 22 साल की शादी जेफ के साथ, तो एट सम पॉइंट मैं वैसे फेसबुक पे बड़े दिनों तक एक्टिव नहीं थी, फिर हुई जब तो मैं उस जेफ को खूब सारी चीजें भेजती थी तो या टैग करती थी, तो जेफ का कभी जवाब ही नहीं आता, कभी कुछ लाइक वाइक नहीं करते थे। तो मैंने कहा यार तुम करते क्यों नहीं हो? बोले मेरे ख्याल से मैंने तुमको ना एक स्पेशल कैटेगरी में डाला हुआ है, मेरे पास अलर्ट्स नहीं आते तुम्हारे। मैंने कहा क्यों? कहते कि मगर तुमसे तो हमेशा बात होती रहती है, राइट? एंड इट बिकेम सच अ जोक। मेरी बेटी भी मुझे चिढ़ाती रहती है, माँ डैडी हैज ब्लॉक्ड यू, एंड इट्स ट्रू। कहा तो लोग एक दूसरे को यू आर माय लव ये और वो, और मेरा पति कहता है ये मेरे आई एम दिस इज अ डिफरेंट प्लेस वेयर आई इंटरेक्ट विद डिफरेंट पीपल। वहां पर जरूरी नहीं है कि हम तुम और मैं इंटरेक्ट करें, तो मेरा ये रोना था भैया। I will corollary to that, because then you do have a very healthy relationship, right? Jeff and you, for so many years you've been married and you have never put yourself out on display as a couple. Most of the time you don't. I mean, once in a while there is which is natural. I was once in a relationship where whenever we had parties and crowds around, the man was all over me, and then whenever we were in private, he would turn his back, and that was so strange. And I mean, he needed that perfect picture of a relationship while things were not healthy between us at all. So that's what perfect picture is. I think we all can recognize that. कहीं ना कहीं हम लोग सब कैरी करते हैं अपनी। We're going to get brickbats from a lot of people who do have. पहले तो मैं जेफ को बोलती हूँ मुझे अनब्लॉक करे। ठीक है विस्मिता। So next time let's talk about aging and menopause for women. चलो ठीक है। Or men also, but let's talk about aging and menopause. Yeah, realistic, hardcore realistic picture. It will get ugly, maybe. All right. Okay. All right. Love you. Bye bye.